Assalamu alaikum, dear students. The poem that we'll be doing today is The Subalterns by Thomas Hardy. Thomas Hardy being a prominent novelist in the world of English literature, but today what we're doing is one of the few poems that he has written. He's primarily a novelist. Novels ज़्यादा लिखे हैं Thomas Hardy ने, but इधर हम आज उनकी एक poem है, which is a short poem, a simple poem, but with a very deep philosophy. The basic philosophy जो इस poem की ये है कि all the forces of nature and all the elements of nature that bring about trouble or make things difficult for human beings have very little to do with their own wish to do it. यानी कि जितनी मुश्किलात इंसान की जिंदगी में आती हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं on one pretext or the other, it has nothing to do with their own self. It has nothing to do, for example, अगर कोई बीमारी आपको हो जाती है or a certain disease, it has nothing to do with the disease itself, because ये तमाम चीजें जो इंसान की जिंदगी में होती हैं, they have to do with the ultimate power. The ultimate power किसकी है? Like we all know, it is Almighty God. So this is the basic philosophy of the poem. जो ये over a couple of stanzas the poet has tried to tell us. So first, if you look at the first stanza, the word poor wanderer here refers to human beings. So he's saying human beings who go about here and there. Usko jo hai, the laden sky, the grey sky addresses the poor human beings, and he says that whatever difficulties that you're encountering, it has to do with a certain law that is in action, the laws in force which are governed by God Almighty, and it is Him that brings about all these changes in the lives of all human beings. The second stanza is about the north wind. And the north wind says that instead of freezing these human beings, that, you know, when it is cold, obviously, jab sardi hoti hai, hawa chalti hai, insano ko thand lagti hai. So he's saying that I, or the wind itself, also has the ability to warm human beings. He's saying कि I would want to make you warm. मैं चाहती हूँ कि मैं आपको गर्म भी रखूँ, etc. लेकिन there is, I am also ruled as thou. जैसे आप के ऊपर किसी का रूल है, उसी तरह मेरे ऊपर भी किसी का रूल है. And again, that rule, girls, like I've said before, has to do with the rule of God Almighty. In the third stanza, it is sickness that is addressing human beings. यानी बीमारी मुखातिब है इंसानों से, और वो ये कह रही है कि it is not, I do not want to, I don't intend to make you sick. और मेरी आई हैव नो आँख नो स्पाइट, मेरी तुम्हारे तरफ, इंसानों की तरफ कोई दुश्मनी नहीं है. आई डोंट हेट ह्यूमन बींग्स, बट आई एम अगेन गवर्नड बाय समबडी, आई एम रूल्ड बाय समबडी. मुझे हुक्म मिलता है कि मैं किसी के पास जाऊं या उसे बीमार करूं. फोर्थ स्टैंजा में अगर आप देखें, you will see that it is death that is sort of addressing the human beings, and it is saying again that I don't want you to die, and it is not me who intends to make you die, but जैसे इंसान जो है एक तरह का slave है to Almighty God, the ultimate force of nature, उसी तरह से जो मैं हूँ, मैं मौत जो हूँ, जो इंसान की तरफ आती हूँ और किसी का गॉड फॉरबिड कब्र में जाने का सबब बनती हूँ, आई हैव नो पावर ओवर माई सेल्फ. I am also governed by somebody else, like all human beings are. The last stanza has to do with all these forces of nature coming together, and he's saying in the last stanza, Thomas Hardy, कि ये सब nature के जो forces हैं, death है, sickness है, the sky है, the wind है, they smile at each other, right? And then they say कि, you know, they look at life in the eye and they say कि जैसे जिंदगी के अंदर इंसान पैसिव होते हैं, यानी कि वो they have to passively accept what life throws at them.
यानी इंसान का जो जर्नी ऑफ लाइफ है उसके अंदर जो मुश्किलात आती हैं इट्सेट्रा, ह्यूमन बींग्स हैव नो कंट्रोल ऑफ देम। ऑफ कोर्स वी कैन फाइट इट, बट उनका आना या ना आना इंसानों के कंट्रोल में नहीं है। सो सिमिलरली जो ये नेचर के फोर्सेस भी हैं, which I have mentioned before, all death and wind and sickness, ये सारे भी जो हैं, they are governed by the ultimate power or the ultimate God Almighty. So again, girls, this is a very short poem, but with a very intricate philosophy that has been put down by the writer in a very beautiful manner. बेसिक एसेंशियल जो आपने जहन में बात जो रखनी है वो ये है कि द पोएम रेफर्स टू द ऑब्स्टिकल्स दैट वन फेसेस इन लाइफ। एंड अगेन दीज ऑब्स्टिकल्स यानी कि ये जो चीजें हैं, द ऑब्स्टिकल्स आई एम रेफरिंग टू सिकनेस, I am referring to harsh weather which comes in the form of cold wind, and I'm referring to that. ये जो obstacles in life हैं, they have no control over themselves and they are governed by God Almighty, who puts down certain ultimate laws of nature, and he tells the ultimate laws of nature to act on in a certain manner or in a certain fashion. अगर आप इसकी डिक्शन देखें, यानी कि लैंग्वेज देखें इस पोएम की पूरी, द सब एल्ट्रंस की, तो इट इज डिराइव फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। ये वर्ड्स लाइक दी, वर्ड्स लाइक हिदर, these are all words जो old English में से लिए गए हैं. So thou, again another word that you will see, these are all derivatives, not even derivatives exactly जैसे old English थी, उससे inspired है इसकी सारी diction and language. And अगर आप पूरी poem देखें, it comes in the form of a harsh journey, यानी कि एक मुश्किल सफर जो है उसके फॉर्म के अंदर ये पूरी पोएम की थीम जो है वो डेवलप की गई है. एंड दिस जर्नी ऑन द लिटरल सेंस रेफर्स टू अ हार्श जर्नी, एक मुश्किल सफर. और इफ यू लुक एट द मेटाफोरिकल सेंस, यानी कि इसको अलामती तौर पे या इसका मेटाफोरिकल सेंस अगर आप देखें, तो इट रेफर्स टू द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी कि जो जिंदगी का सफर है ओवरऑल, उसको ये जो है सिंबलाइज करता है. If you are to look at the overall format, the poem consists of 5 stanzas. Girls, they have been numbered also in your book, इसलिए आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं होगी. 5 stanzas हैं और हर stanza के अंदर 4 lines हैं, और इन 4 lines के अंदर rhyme scheme भी स्पेसिफिक है, एंड दैट इज ए बी, यानी कि ए बी राइम स्कीम से मुराद है कि फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करती है. जैसे आई सी इन द फोर्थ स्टैंजा आप देख सकते हैं, से एंड डे ये दोनों राइम कर रहे हैं, और इसी तरह आपकी सेकंड एंड फोर्थ लाइन जो है ये भी राइम कर रही है. ग्रेव एंड स्लेव, इस तरह की राइम स्कीम को गर्ल्स कहते हैं ए बी, यानी कि आपकी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम करती है, उनका आखिरी लफ्ज राइम करता है, और इसी तरह आपका सेकंड एंड फोर्थ लाइन राइम करती है. द लास्ट वर्ड स्पेशली टेंड्स टू राइम. जो प्राइमरी डिवाइस है इसके अंदर, यानी कि लाइक यू गर्ल्स शुड बाय नाउ हैव अ सर्टेन आइडिया. नो फर्स्ट ईयर में लिटरेचर का इतना नो हाउ नहीं होता, लेकिन डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं विच लेटर ऑन वी विल गो ऑन टू स्टडी, उनमें एक है पर्सोनिफिकेशन. इस पूरी पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन बहुत ज्यादा यूज की गई है. पर्सोनिफिकेशन रेफर्स टू वेयर वो चीजें जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि इसके अंदर दिया गया है विंड और सिकनेस इन इटसेल्फ, उसकी कोई जान नहीं एटसेट्रा, उनको ह्यूमन ट्रेट्स दिए जाएं, यानी कि इंसानी क्वालिटीज जब दी जाएं, दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. सो द प्राइमरी डिवाइस जो यहाँ पे वो पर्सोनिफिकेशन है. जैसे कि नॉर्थ विंड को ह्यूमन एबिलिटी दी गई है टू ब्रीथ. Okay, so then again, of course, north wind it itself cannot breathe, but it has been given the quality of breathing, which is a human trait. Similarly, जो sky है उसको human ability दी गई है to sympathize with the traveler. All right, वो यानी तरस खाता है
ट्रैवलर के साथ, which obviously generally स्काई में ये ability नहीं है, but in poetry हम कुछ devices use करते हैं to make them more appealing, and personification is one of them. And then again, death जो है, it speaks directly to human beings. Again, death does not have the ability to speak, but इधर यहाँ पर वो device जो है वो use किया गया है as a personification. So girls, this is again, I would say, not a very difficult poem to understand. Theme इसकी slightly complicated है. Language and diction भी old English से derive की गई है. But if you sort of listen clearly to the lecture and also look at the intricate how the poet has put in the words, it's not very difficult. The diction is inspired by old English, but when you sort of connect the words together, अगर किसी चीज का certain meaning आपको मुश्किल भी लगे, you will be able to derive the meaning from the whole poem. So just remember कि essential main theme जो इस poem की ये है कि journey of life is difficult. इसके अंदर बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव टू काउंटर दीज. और जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स की भी पावर नहीं है ओवर देमसेल्व्स. द पावर इज ओनली दैट ऑफ गॉड, and he is the one who is responsible for putting these obstacles in human beings life, because life in itself is a journey. एक सफर है, एक मुश्किल सफर है, and human beings have no other choice but to counter all these obstacles with as much um, might and as much as willpower that they have. Thank you so much, girls, and I hope you've understood.